member of the Legislative Assembly of the state of Jammu and Kashmir, which had autonomous status in independent India, Āṣāḍha was the first to understand that Ladak's identity as a Buddhist majority province was critical for the security of India. In a note in 1952 to the Government of India, Bakula wrote, "Let India grasp this fact clearly. The existence of the Buddhist community in Ladakh is the only factor which guarantees to it the possession of this important frontier. To save the frontier India must save the Buddhists of Ladakh, and to save the Buddhists of Ladakh, it must take over administrative control of the district without the loss of a moment." Long before anyone else, Āṣāḍha Rinpoche demanded the union of Ladakh with the rest of India without any special qualifications, and for the region to be directly governed as a part of India, rather than as part of Jammu. Āṣāḍha Rinpoche had spent his early years as a student monk, achieving the highest honours in the centres of Buddhist learning in Tibet. He understood what destruction communism brought to traditional societies. So for years, as a Buddhist monk and an Indian politician, his connections of worship and reverence inside the Soviet Union and its affiliate countries, including Mongolia. It was in Mongolia that Āṣāḍha would have perhaps his greatest impact. Hello. Many of Mongolian people were popular in the city. Hello. Buddhism came from India by Tibet, and so we think that India is very close to Mongolia. Geographically, of course, it is very distant, but spiritually and culture-wise, it is very close. So it was a very wise decision by the Indian government in late 80s to appoint him as... Good morning and a very warm welcome. I request all to kindly keep their phones in silent mode. Thank you. Āṣāḍha Rinpoche was India's ambassador in Mongolia. It was a diplomatic stint like no other. Āṣāḍha Rinpoche was an iconic Buddhist teacher who, through his sheer spiritual knowledge, through the manner of his preaching, was able to win hearts of the Mongolians. When I think about Āṣāḍha Rinpoche, he reminds me, or I start thinking that maybe Mahatma Gandhi was like him. Because I read a lot about Mahatma Gandhi. I had sort of visual image of Mahatma Gandhi. And when I was meeting with Āṣāḍha Rinpoche, I was always thinking that maybe Mahatma Gandhi was like him. He was a good model of a real Buddhist monk, of good ambassador, of good envoy of whole of India, of Indian people to Mongolia. So all these things combined helped us to love him, respect him, and with this love and respect, he was able to conquer the hearts of the Mongols. And that helped a lot in the revival of Buddhism. Long before Āṣāḍha arrived in Mongolia, a legend had echoed across the vast landlocked nation. In Mongolia, there was this prophecy that would say that, when Buddhism was at its peak at that time, during the 8th Book time, the prophecy was that eventually, in the coming time period, Buddhism will be totally annihilated by the red forces and Āṣāḍha will come and revive. So that was the very strange prophecy made. And they started worshipping Āṣāḍha from that time.
they were talking, but Bakulam Rinpoche and me, I felt like we are two of us together somewhere else, and there's something connection with me. And then it changed all my thinking. And then I thought, yes, I am right back. This is the person who must send me to India to study the quest which I want to find in Islam. And then after 3 months, the answer came from ICCR so that I could go and study in India. I was the first student from Mongolia to join Indian universities, and then the 1 month from Gandhar we were sent. And Bakul Rinpoche said, "You are lucky one." And then studying in the Banaras University, I heard this story about Naidam Bakular, but I want to prove that somewhere in the Gandhu there must be proof about Bakular, 1916, about 16 Barhan's story. But then I found one sutra which called Naidam Jutuk, where it describes the role of Bakular Rinpoche, what Buddha had given him some mission so that he could help the Dhamma, wherever there is Dhamma riders, he must go and help them to establish their Dhamma. So then I was so happy that I met the right person, the Dhamma person who Buddha sent to Mongolia. As long as the chants echo in the mountains, as long as the Buddha is worshipped, as long as butter lamps are lit, in the monasteries, in Ladakh, in Mongolia, across India and Central Asia, the love and legacy of Kushok Bakula shall live on.
I kindly request all to be seated as we await the arrival of our chief guest, the Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Kesav Prasad Maurya ji. I request once again to keep your phones in silent mode. Namo Buddhaya and good morning. Our chief guest, the Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Kesav Prasad Maurya ji, has reached the venue. And while our chief guest arrives, we would like to invite Shatse Khensur Jangchup Choyden Rinpoche, Secretary General IBC, Honorable Vice Chancellor of Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Professor Wangchuk Dorje Negiji, and our Dhamma speaker of the day, Venerable Dr. K. Siri Sumedha Thero, on stage to welcome our chief guest, Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Kesav Prasad Maurya ji, with a khatag. While we await the arrival of our chief guest, I once again repeat, please keep your phones in silent mode. Namo Buddhaya. On behalf of International Buddhist Confederation and Central Institute of Higher Tibetan Studies, we thank our honorable chief guest for gracing the event, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Kesav Prasad Maurya ji. I kindly request Venerable to welcome him with a khatag. I kindly request all the dignitaries to light the lamp.
I request all the dignitaries to come together for a group photo. Requesting all the esteemed dignitaries to kindly take their seat. Namo Buddhaya. On behalf of the International Buddhist Confederation and the Central Institute of Higher Tibetan Studies, I welcome Honorable Chief Guest, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Kesav Prasad Maurya Ji, venerable members of the Sangha, distinguished dignitaries and dear friends in Dhamma, to the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath. Today, we gather to recall a sacred moment in history, a moment when the Blessed One chose to share with humanity the path to liberation. For 7 weeks after his enlightenment, the Buddha remained near the Bodhi tree, contemplating the depth of the truth he had realized. He saw existence clearly and understood that although suffering is universal, there is a path to its cessation. On this auspicious occasion of Āṣāḍha Pūrṇimā, 2,500 years ago, the Buddha taught the Dhammacakkappavattana Sutta in Isipatana Mrigadaya, which is today known as Sarnath. On 25th July 2026, Sarnath was inscribed as the UNESCO World Heritage Site, India's 45th listing that recognizes this. And today, we all come together to honor that timeless truth. I will now request to commence the sacred chanting in Pali, Sanskrit, followed by Tibetan. आप सभी लोग 3 बार बोलिए साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पश्यको ओपनय्यको पच्यतं वेदितव्यो विज्ञो इति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उचपटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष पुंगला एष भगवतो सावक संघो। पाहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि
करनयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाधि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु। त्रैलोक्यनाथं सुरवरनमितं पारसंसारतीनं धीरं गाम्भीर्यवन्तं सकलगुणनिधिं धर्मराजाभिषिक्तं तृष्णा मोहान्धकारं कलिकलुषहरं कामलोवादवन्तं तं वन्दे शाक्यसिंहं प्रणमितशिरसा सर्वकालं नमामि सर्वकालं नमामि वन्दे श्रीवज्रसत्वं भुवनवरगुरुं सर्वभूतं भवन्तं नानारूपं जिनेन्द्रं तिमिरभयहरं निर्मितं मेरुशान्तं धर्माधारं मुनीनां जिनगुणशुभदं मण्डलं वज्रधातुं सर्वानन्दैकरूपं परमसुखमयं देहिनां मोक्षहेतुं देहिनां मोक्षहेतुं सङ्गस्त्रैलोक्यबन्धु गुणगणनिलयो बोधिचितः सुचितः बोधिश्चानन्दसितो विजितकलिमलो हेरुको नीलदण्डः बुद्धः सारङ्गराजो विजितगुणगणः सर्वसत्त्वानुकम्पी तुष्टः सर्वार्थसिद्धिं ददतु समरसा मङ्गलं बोधिसत्त्वः मङ्गलं बोधिसत्त्वः मङ्गलं बोधिसत्त्वः।
We will now have the honor of hearing the welcome address by Venerable Shartse Khensur Jangchup Choeden Rinpoche, Secretary General, International Buddhist Confederation. I request Rinpoche to kindly address the gathering. Anirodham, anutpadam, anuchedam, ashashvatam, anekaartham, nanartham, nagamam, nirgamam, yaha pratitya samutpadam, parapancho pasimam shivam, deshyamasa sambudastam, vande vadatam varam. Kangi tenjin devarjung, kapa meba, ke meba, cheba meba, tang meba, hoa meba, do meba. 타데 투민 튼직민 떠번 이시 시된바 조베 상게 만남기 담바텔라 차세로 by paying refuge and respect to
the historical great Buddha Shakyamuni, and also to the Tri Ratan, the Sangha Ratan gathering in this hall, and the Buddha Ratan that is existing in this universe. I take great pleasure to welcome you all to this event of Āṣāḍha Pūrṇimā of the year 2026. We feel greatly blessed as an organizer, the International Buddhist Confederation and the Sarnath Buddhist Tibetan, the Institute for Higher Tibetan Studies, together to be able to host all of you, and particularly I'm very grateful from the depth of my heart to our chief guest, the Deputy Chief Minister of this state, the Uttar Pradesh, Shri CIHTS Maurya ji, for his presence. He make his time available for us, though he is extremely busy and he has a lot of things to attend for. And I also thank our guest speaker today, Most Venerable Kesari Sumedha ji, the former Secretary General of the Mahabodhi Society, for making yourself available, and all the dignitaries and public and brothers and sisters gathering here in this hall. We are gathering for a great purpose, to celebrate the sharing of the wisdom by great Buddha Shakyamuni. This is known as Āṣāḍha Pūrṇimā, also known as Dhammacakkappavattana Divas. Or we also say that the celebration of the first sermon of the Buddha Shakyamuni. This day has a great significance. With the Dhammacakkappavattana, the Dharma has born in this world. Before that, Dharma didn't exist. So this is the celebration of the birthday of the Dharma. With the birth of the Dharma, gradually Sangha also was born. So with that, the Tri Ratan became complete, which is very important in our tradition. We don't take refuge into any particular human god or personalized god or something like that. We take refuge into the Tri Ratan, Buddha, Dharma, and Sangha. And when these three things get together, it creates a kind of a unique value for us. So this is a unique celebration of, particularly of the birth of the Dharma and the birth of the Sangha. Birth of the Buddha as an enlightened being, we celebrate in the Vaishakh day, Āṣāḍha Pūrṇimā. So for that reason, this is a very significant gathering, and I do believe all of you are having this understanding in the depth of your heart. So IBC takes kind of a great pleasure and feels proud to celebrate this day continuously every year. We have been celebrating this day for many years in past, particularly in this area, in Sarnath, where Dharma was first born. We have been continuously celebrating this for 5th year. This is 5th consecutive celebration of the Āṣāḍha Pūrṇimā, or the Dhammacakkappavattana Day, in this kind of a particular holy land organized by the IBC, and also in a certain occasion we had the kind of help of the institute here. So today we should remember the great contribution of the Buddha by sharing his wisdom, not keeping it for himself, sharing his wisdom with the people so that people can
taste it and people can enjoy the benefits and result of it. So we should also try to do the same thing by learning the things from the Buddha and the great masters of the past. So now, without taking much of your time, I once again would like to welcome all of you to this August gathering here today. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. We shall now hear the Dhamma discourse. But before I invite our speaker, I would like to read a few lines about him. Venerable Dr. Kahawate Siri Sumedha Thero is a scholar and the High Priest and Chief Incumbent of the Jambudip Sri Lanka Buddhist Temple in Sarnath. He also serves as the President of Indo-Sri Lanka International Buddhist Association, promoting Buddhist education and strengthening cultural and religious ties between India and Sri Lanka. Through his leadership, scholarship, and public engagement, he continues to promote Buddha Dhamma, preserve Buddhist heritage, and foster international Buddhist cooperation. I shall now invite Venerable Dr. K. Siri Sumedha Thero to enlighten us with the Dhamma discourse. And I ask Venerable Shatse Khensur Jangchup Choydan Rinpoche, Secretary General IBC, to accompany him on stage and felicitate him. සංකම්පයං දස සහස්සිය ලෝක ධාතුං දේශේසි යත්‍ර භගවා වරධම්මචක්කං වාරාණසී පුර සමීප වනේමිගානං තන් ධම්මචේතිය මහං Sirasa namami. I pay my respect sacred spot Dhammacakkappavattana, where Buddha expounded Dhammacakkappavattana, first sermon surrounded by human beings and gods, situated in Deer Park in the vicinity of Kasi, Benares. Most venerable members of the Mahasangha, Venerable Professor Wanchuk Dorje Negi, Honorable Vice Chancellor, Central Institute of Tibetan Studies, Venerable Professor, Venerable Rinpoche Saste Kesar Jangdip Choden, Venerable General Secretary, International Buddhist Confederation, Government of India, Ministry of Culture, New Delhi, our respected Ādharaniya Kesava Prasad Maurya ji,
Honorable Deputy Chief Minister, Government of Uttar Pradesh, and through follower and present era Ashoka Maurya generation and वर्तमान में हम लोग का उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में धर्म महामात्य और आदरणीय रघुवीर प्रसाद भटनागर जी, newly appointed Director General, International Buddhist Confederation, New Delhi. You are most welcome. And distinguished scholars, participants, brothers and sisters. On the occasion of delivering first sermon Dhammacakka by the Buddha to mark the Āṣāḍha Pūrṇimā, we are gathered here to celebrate the occasion, historical occasion. First of all, on behalf of Buddhist societies and temples and monasteries situated at the very spot where Buddha given first sermon in the vicinity of Deer Park, surrounded by Sarnath, we convey our gratitude and appreciation to International Buddhist Confederation, all the officers and Government of India, Ministry of Culture, and also Government of Uttar Pradesh, organizing this historical auspicious occasion in this newly declared Jivak Auditorium in Tibetan University. Name Jivaka, personal physician of Buddha. In the beginning, Buddha declared, Dhammosada samang natti etang pivata bhikkhavi. विश्व में संसार में पूरा संसार एक बीमारी है, होल वर्ल्ड डिसीज, पूरा संसार का बीमार के लिए धम्मो सद समंग नत्ति एतं पिबति भिक्खवे, धम्म से अलावा, बुद्ध का टीचिंग से अलावा ऐसा कुछ मेडिसिन नहीं है. Then Buddha asked monks and disciples to drink this medicine, Dhamma. Then, on behalf of Buddhist societies and temples and monasteries, here in Sarnath, we extend blessings and prayers, offering prayers. Over 500 million Buddhist followers all over the world, representing Theravada, Mahayana and Vajrayana traditions. Today they are celebrating this august occasion worldwide. Buddha's message, it was for mankind, for the human being, and for all the generations. Swakkata Bhagavato Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehi Passiko Opanaiko Pachattang Veditabbo Vinyo Hiti. Teaching of the Buddha, properly expounded. It was open for everybody. Everybody can see and realize. And also immediate effect resulting. Sandrustika. Therefore, we express our blessings and prayers for world peace and prosperous. Buddha's teaching Dhammacakkappavattana, it is recorded in various traditions in Theravada and Mahayana and Vajrayana. Coming on the way from
Bodh Gaya to Varanasi. Buddha met Upaka, one Ajivaka. And he asked Buddha, where are you going? Who are you? The Buddha explained, Dhammacakkappavattana Gacchami Kasinam Purang. Andabhutasming Lokasming Ahansang Amata Dundubing. Dhammacakkappavattana Gacchami Kasinam Puram. Upaka, I am moving to Benares, Kasi city, Kasi country, to turn wheel of law, Dhammacakkappavattana. Andabhutasming Lokasming Ahantang Amata Dundubing. पूरा दुनिया अंधेरा में है, अज्ञान में है. अज्ञान दूर करने के लिए, to remove darkness, I will beat their drum of deathless. अमर ड्रम भगवान बुद्ध ने बीट करने के लिए अमृत दुंदुबी दुनिया को देने के लिए भगवान बुद्ध ने बनारस आ गया. और थेरवाद हिस्ट्री में बुद्ध गया से सारनाथ आते वक्त कहाँ था, 7 जगह उल्लेख कर लिया. There are 7 places recorded in Theravada tradition while Buddha walking from Bodh Gaya to Varanasi. 7 places Buddha stayed. And 8 places mentioned in Lalita Vistara and Mahayana Buddhism. Aparagaya, Sudarsanaga Bhavan, Chundavila, Saratipura, Mangalpura, and Gangatra. These are the places Buddha stayed during the traveling from Bodh Gaya to Varanasi for preaching. Gangatra, on behalf of all Buddhist community worldwide and Buddhist temples, we would like to express our gratitude to Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Yogi Adityanath, Uttar Pradesh government. You established that Namo Ghat, Gangatra, with folding hand, welcoming Buddha. It is my interpretation. That is the place where Buddha crossed from Bodh Gaya to Varanasi, Kasi city. Then, now with folding hand, Kasi, on behalf of Kasi people, welcoming Buddha, now you establish that Namo Ghat. And according to Encyclopedia of Buddhism, Buddha visited first Kasi, not Sarnath. First Buddha visited Kasi, then after he entered to Āṣāḍha Deer Park. And Buddha addressed 5 disciples. Dveme bhikkhave anta pabbajiten sevitabba. Yo chayang kamesu kamasu kallikanu yogo hino gammo pautujjaniko anaryo anatta sanghito. Yo chayang atta kilomatanu yogo dukkho anaryo anatta sanghito. Venerable monks, disciples, if someone willing to realize the truth, then should avoid 2 paths, 2 methods. Jada dukh lena, jada sukh lena. ये दोनों में दूर होना है. एते उभो अन्ते अनुपगम मज्जिमा पटिपदा तथागते नभि संबुद्धा. Without moving these 2 methods, I realize another way. Majjima patipada, middle path. Ayameva ariyo attangiko maggo. We call this noble 8-fold path Arya Ashtanga Marga. Samma ditti samma sankappa samma vacha samma kammanta samma ajiva samma vayama samma sati samma samadhi. These are the 4 noble 8-fold path. Buddha explained, Idang kopana bhikkhave dukkhang ariya sacchan jatipi dukkha jarapi dukkha vyadipi dukkha maranampi dukkha.
my disciple, what is this first noble truth? Dukkhari satya. Jatipi dukkha. Birth is conflict. Jarapi dukkha, getting age is conflict. Vyadipi dukkha, becoming sick is conflict. Maranampi dukkhang, getting death also suffering. Whole world, whole body, whole life suffering. Therefore, Buddha expounded this noble teaching, the way of living, and Buddha's teaching open for everybody. And therefore, in this noble occasion, we on behalf of Buddhist societies and temples again appreciate that IBC, International Buddhist Confederation, organized this gathering and celebration in this auspicious occasion. Rice Davis, Western scholar, founder of Pali Text Buddhist Society, he mentioned Dhammacakkappavattana in historically. It is declaration of formula of Buddha's teaching Buddhism and foundation of kingdom of righteousness. Dharma Rajya का स्थापना दिवस है, धर्मिष्ठ समाज का स्थापना का दिवस है. Or historically it is very important. During last 45 years, Buddha traveled within Uttar Pradesh and Bihar, Magadha and Khasi Kosala kingdoms. Presently, almost all the important Buddhist places lying in Uttar Pradesh and Bihar. Therefore, Buddha born in Uttar Pradesh and Buddha preached in Uttar Pradesh. Buddha passing away in Uttar Pradesh. Buddha long time spent Āṣāḍha it is in Uttar Pradesh. Therefore, almost all the important Buddhist places related in Uttar Pradesh. Buddha Gaya it is Bihar. Buddha attained enlightenment and he met scholars and philosophers in Rajgir. Then therefore, after Buddha's passing away, first of all, 60 disciples, they propagate Buddha's teaching. Then after first council, second council, third council, Emperor Ashoka propagated Buddha's message beyond geographical boundaries. Then after Padmasambhava, Bodhisattva took Buddha's message to Tibet and Bhutan, and Hyunsang came all the way from China. Then Buddhism gone to China and Japan and Korea, Mahayana Buddhism during the Kanishka period. Then later during the British time, Alexander Cunningham discovered all the important Buddhist places. Anagarika Dharmapala came all the way, established Mahabodhisattva of India to revival Buddhism. And after independence, Asoka Chakra, Dhammacakkappavattana and Lion Capital became symbol of government in India. Then today, 2 days before you receive the noble message, Sarnath, the place where Buddha given first sermon, declared as a UNESCO heritage. Therefore, now 1 year before, under the patronage of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, Pali, the teaching language of the Buddha, received as a status of official language. Therefore, connecting all the important Buddhist places by central government and state government, constructed highways and airport and new trains, and developed all the important Buddhist places. Today, on behalf of World Buddhist Community and important Buddhist places and Buddhist temples and monasteries, we convey again our gratitude to Mr. Raghuvir Prasad Bhatnagarji. During last 10 years and under the patronage of International Buddhist Confederation, Venerable Rinpoche, General Secretary, and all of you organized several times to celebrate Buddha birthday and Buddha Dhammacakka Day here in Sarnath and India, many places. And today in India, large number of Buddhist temples and monasteries and Buddhist monks and Buddhist communities, Namo Buddhaya, Buddhist flag, and also Vandami Bhante, in words everywhere uttering. Then therefore, we
Again, while appreciating the noble contribution made for the Buddha's Dhamma propagated by Indian government and Indian communities and Buddhist monks and scholars, and especially His Holiness Dalai Lama, during last 50 years, he dedicated his life to propagate Buddha's message. Dr. Ambedkar ji, after embracing Buddhism, there are a large number of Buddhist people in India, they are celebrating Buddha's culture. While appreciating these, all the contributions, we express again our gratitude and pray, may Buddha's message prevail in the world, may everybody be happy. Sukho Buddhanang Uppado, Sukhaha Saddhamma Desana. Bhaut Sabba Mangala. Thank you, Venerable Doctor, for your inspiring words. I will now invite the Honorable Vice-Chancellor of Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Venerable Professor Wangchuk Dorje Negi ji, to share his remarks on Dhammacakkappavattana Divas. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Most Venerable Bhikshu Mahasangha, Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Keshav Prasad Maurya ji, Chief Guest of the program, Venerable Sumedho Thero, President of Indo-Sri Lankan International Buddhist Association, Venerable Khendzur Rinpoche, Secretary General of IBC, Shri Raghav Bhatnagar ji, Director General of IBC, distinguished guests, faculties members, staffs, and my dear students. I am deeply honored to share my brief remark on this auspicious occasion of Āṣāḍha Pūrṇimā, Dhammacakkappavattana Divas. In the history of ancient India, if there is one monumentally important place and day in the showcase to the world, it is the sacred land of Rishi Patan Mrigdav Sarnath. And this holy day, when the Tathagata Buddha first turned the wheel of Dhamma. Generally speaking, Varanasi stands among the oldest living city in the world. Before attaining Buddhahood, Siddhartha Gautama took birth as a bodhisattva several times in the ancient Varanasi to accumulate merit. During the time of Buddha, Varanasi was prominent center of the knowledge, along with Rajgir, Sharavasti, Ayodhya, Champa, and Vaishali. Furthermore, as recorded in the classical texts like Buddha Vansha, Atkatha, and Ashwaghosh, Buddhacharit, certain truth remain absolute. Just as a fire pervades wood and water rests beneath the earth, the Buddha attained Buddhahood at Bodh Gaya, and all delivered their first Dhamma discourse here at Sarnath. It is a matter of immense joy and pride for all of us across the Indian nation and the global Buddhist community that this holy ancient site of Sarnath has now been inscribed in the UNESCO World Heritage Site. This global honor recognizes not only Sarnath
as the birthplace of Buddha, but also recognize the broader Bharatiya Jnana Parampara, the Indian knowledge system on the world stage. Just as the Mahabodhi temple in Bodh Gaya and the ancient site of Nalanda University were inscribed in the UNESCO World Heritage List in 2002 and 2016 respectively, today Sarnath stand celebrated globally with its inscription in the World Heritage Site. Sarnath is the birthplace of the profound knowledge tradition, born of the Tathagat Buddha's realization of Samyak Sambodhi in Bodh Gaya, a tradition rooted in the core philosophy of Pratitya Samutpada and Madhyam Marg, the Nalanda later rigorously nurtured, which later spread far beyond its geographical origin and flourish. While the nomination process of the Sarnath in the World Heritage List began in 1998, today our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, reminds the world from international platform that India has given the world Buddha, not the world Yuddha. Under the vision and through the dedicated effort of the Ministry of Culture, led by Honorable Culture Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji and Honorable Culture Secretary Shri Vivek Agarwal ji, this milestone has been achieved. On behalf of entire Buddhist community, I extended our heartfelt congratulations and gratitude to them. At the heart of Dhamma discourse, propounded by the Buddha at Sarnath, is the profound philosophy of Pratitya Samutpada, interdependent origination. The Buddha taught that nothing exists in this isolation. We are all interconnected. The physical world depends on its inhabitants. Leaders depend on their subjects. Physician on patient, teacher on students, and businesses on their consumer and staffs. Nation too depend on one another. When one nation or one society faces crisis, all beings are affected because of this interdependent nature. From this understanding of interdependent, naturally follow the Buddha's teaching on the conduct, ahimsa, non-violence, and the four immeasurable loving kindness, compassion, joy, and equanimity. The Buddha said that no dispute can be resolved through the extreme path. True solution come through the middle way and meaningful dialogue. Today, in an era marked by the rapid globalization, consumerism, environmental exploitations, and conflict over resources, these timeless principles are more relevant than ever. The genuine purpose of Dharma is to free from suffering, bring peace to the individual and prosperity in society. The Buddha's teaching address the root cause of our inner suffering, our own attachment, anger, ignorance, and craving. Just as one cannot avoid being burned while holding the blazing fire without first dropping it, we cannot explain true peace without taming our inner mental state. As the Buddha says in the Dhammacakkappavattana Sarva Papasya Akranam Kushalasya Upsampada Swachit Paryotpannam Etang Buddhanam Sasanam. Don't commit any unwholesome deeds. Perform abundant wholesome action and completely train your own mind. This is the teaching of Buddha. These single verses encapsulate the entirely of the Buddha's teaching and spiritual path based upon them. The first line, do not commit an unwholesome deed, represent the higher training of morality
emphasizing ethical discipline and non-violence. The second line, perform abundant wholesome action, represent the higher training of concentration, emphasizing focus on wholesome deed while avoiding distractions. The third line, completely purify your own mind, represent the higher training of wisdom, emphasizing the training of our wild mind and eradication of distracted emotion through the constant reflection on the true nature of all phenomena as impermanent, unsatisfactory, suffering, empty, and selfless. Together, these constitute the three higher training as explained in the Dhammacakkappavattana Sutra. Practicing these three higher trainings allow one to walk the middle path, refraining from the two extreme ends. The extreme indulgence in sensual pleasure and extreme of self-mortification. If we strive to apply the essence of Dhammacakkappavattana Sutra in our daily life, inner peace naturally follow. And because society is simply a collection of individuals, peace within the person ultimately lead to the peace across the world. Thank you. Bhavatu Sarva Mangalam. Thank you, Venerable, for your remarks and insight. Following this, the students of Central Institute of Higher Tibetan Studies will present a skit on the significance of Āṣāḍha Pūrṇimā and its modern-day relevance. सर्वदृष्टि प्रहाणाय यः सद्धर्मं मदेशयत अनुकंपामुपादाय तं नमस्यामि गौतमं बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च या वहि बोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयेभिर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय. मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, सब कुछ, फिर भी मेरा मन अशांत है. आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? रिश्ते तो हैं, मगर विश्वास नहीं है. मगर क्यों? सोशल मीडिया में लाखों लोग हैं, फिर भी मैं अकेली हूँ. ऐसा क्यों? हर जगह भ्रष्टाचार, तनाव, हिंसा और भय. आखिर इसका कारण क्या हो? यह 21वीं सदी है. विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिया है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष यात्रा, डिजिटल क्रांति, यह सब कुछ हमारे सामने है. लेकिन क्या मनुष्य पहले से अधिक शांत हुआ है? आज परिवार टूट रहे हैं, प्रकृति कराह रही है, मनुष्य से दूर होता जा रहा है. आज पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका से कराह रही है. ऐसे में एक प्रश्न उठता है, क्या 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वचन क्या आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं? आइए उत्तर खोजने के लिए हम समय की यात्रा करते हैं. प्रणाम बाबा जी, प्रणाम. सुना है सिद्धार्थ ने कठोर ताप का मार्ग त्याग दिया है. संसार में ताप का मार्ग बड़ा कठिन होता है. क्यों बाबा जी? ठीक कहा कौंडिन्य जी आपने. तभी तो गौतम ने आसान भी छोड़ दिया है. हम उसे अब आसन भी नहीं देंगे तथा ना ही उसका स्वागत सम्मान करेंगे. भतिया जी, आपकी क्या राय है?
एकदम सही कह रहे हैं आप। लगता है उसे जब बोधि प्राप्ति नहीं हुई तभी वह उसे ठुकरा कर साधारण जन बन गया है। बताइए मानव जी, आपका क्या विचार है? अरे चुप रहिए। देखो, सामने से कोई अमित प्रकाश बिखेरते हुए तेजस्वी महापुरुष हमारी ओर चला आ रहा है। देखो देखो, देखो। अरे गौतम के काया मंडल से आभास्वर प्रकाश अनुपम है, बहुत ही विलक्षण है, या तो दिव्य तप की स्थिति है गौतम, आपने तो उस परम तत्व शून्यता का साक्षात्कार कर लिया है, अमृत तत्व ज्ञान का पान कर लिया है, जिसके लिए आपने त्याग किया था। भिक्षुओं, आप लोग विश्वास करें, मुझे सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। तनिक सोचिए, आप लोग तो मेरे साथ बहुत दिनों तक रह चुके हैं। कभी मैंने इतने विश्वास के साथ आप लोगों के सामने इस तरह की बातें की थी? नहीं ना। मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अब आप लोग ना तो मुझे आबूस कहकर संबोधित करें और ना ही मेरे विषय में किसी भी अस्वस्थ धारणा पालें, क्योंकि अब मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। साधु साधु साधु। आप हम सभी शिष्यों को इस अमृत उपदेश को प्रदान कर कृपया धन्य कीजिए। आसन लीजिए। भिक्षुओं, इस संसार में मनुष्य को दो अतियों से सदैव दूर रहना चाहिए। पहली है भोग विलास एवं काम सुख में लिप्त रहना। दूसरी है अप्रत्यक्ष सुख के लिए अपने शरीर को अनेक विध कष्ट देना। भला बताइए, भोग विलास एवं काम सुख में डूबे रहने से कहीं किसी की पिपासा शांत हुई है? यह तो वैसे ही है जैसे कुत्ता रक्त के स्वाद को लेने के लिए सूखी हड्डी को घंटों तक चूसता है और उसे जिस रक्त का स्वाद मिलता है वह हड्डी से शत मसूरों से स्त्रवित उसका स्वयं का होता है। इस प्रकार वह अज्ञान का शिकार होकर अपने को ही विनष्ट करता है। यह अच्छी तरह से जान लो, काम सुख की लिप्सा मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। अब दूसरी अति को ले। लोग अपने शरीर को कष्ट पर कष्ट देना तपस्या समझते हैं। मैंने ऐसे अनेक तपस्वियों को देखा है जो अपने काय कष्ट तपस्या मान बैठे हैं, किंतु मेरे विचार से अपने शरीर को कष्टों के कंटकों में घसीटने से कुछ नहीं प्राप्त होता। वस्तुतः मन की स्वास्थ्यता ही शरीर की स्वास्थ्यता पर निर्भर होती है। जब मन स्वस्थ रहता है तभी किसी भी ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। अतः जीने के लिए स्वल्पाहार अति आवश्यक है। मैं इस बात को आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका मैं बहुत भोगी हूँ, इसलिए मैंने मध्यम मार्ग को अपनाया। गौतम, यह दुख क्या है? इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? भिक्षुओं, यह संसार दुखमय है। जिसे हम सुख समझते हैं वह एक तरह से दुख ही है, और दुख को सुख मान लेना हमारी अज्ञानता है। हम दुख के अस्तित्व को नकार नहीं सकते क्योंकि उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। दुख को व्याख्यायित करने के लिए मैं आप लोगों का ध्यान 4 आर्य सत्यों की ओर आकृष्ट करता हूँ, और वे इस प्रकार हैं। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध
और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यदि इस संसार में दुख है तो उसका कारण भी है। यदि उस कारण का नाश हो जाए तो दुख के निरोध का संभव है, और दुख के नाश का उपाय भी है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। हे गौतम, यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? इस संसार में दुख कई रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। जन्म, जरा, रोग, शोक, प्रिय का वियोग, अवांछित वस्तु आदि की प्राप्ति, यह इस संसार में विद्यमान है। इस सर्वव्यापी आर्य सत्य दुख से छुटकारा पाना ही एक प्रकार से निर्वाण या मोक्ष पाना है। इसे छुटकारा तभी संभव है जब मनुष्य अष्टांगिक मार्ग पर चलेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और अंत में सम्यक समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग है। धन्य है महामानव आप, हमारे अज्ञान, संदेह, अविद्या का आज अंत हो गया है। हम लोगों को निर्वाण का मार्ग मिल गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मचक्र केवल इतिहास का प्रतीक नहीं, बल्कि यह मानव चेतना को सही दिशा दिखाने वाला चक्र है। जब तक संसार में हिंसा, लोभ और अशांति रहेगी, तब तक बुद्ध के द्वारा दिए गए वचन हमारे लिए प्रासंगिक रहेंगे। आइए हम अपने भीतर करुणा, मैत्री तथा प्रज्ञा का दीप जलाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। Thank you for the wonderful performance. Today's chief guest for the occasion is the Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Āṣāḍha Pūrṇimā ji. A leader whose journey from humble beginnings to the high office of Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh stands as a testament to perseverance, dedication, and service to people. Born on 7th May 1969 in Sarnath, Kausambi. जी I request the Honorable Vice Chancellor, CIHTS, and Secretary General IBC to felicitate him.
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के तत्वाधान में मेरा यह दूसरा कार्यक्रम है जिसमें आने का सौभाग्य मिला। पहला कार्यक्रम था भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर के रूस के कलमिकिया गणराज्य में जाने का, और दूसरा कार्यक्रम आज तब है जब आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसे धम्मचक्कप्रवर्तना के नाम से हम लोग जानते हैं, और वह कार्यक्रम तब रखा गया है जब सारनाथ को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृति मिल गई है, और इसकी मैं आप सबको पहले शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय बेन जांग चू चोडेन रिम्पोचे, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, आदरणीय बेन प्रोफेसर डॉक्टर वांगचुंग दोरोजे नेगी, कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, और श्री राघव प्रसाद भटनागर जी जो महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आज यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमती सुनीता चंद्रा, रजिस्ट्रार केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, बेन डॉक्टर कहावत्ते श्री सुमेधा थेरो, अध्यक्ष भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, अन्य समस्त भिक्षुगण, यहाँ अध्ययनरत सभी अलग अलग देशों से जो हमारे छात्र हैं, मैं उनका सबका उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से स्वागत भी करता हूं, और आपके उज्जवल भविष्य की भगवान तथागत बुद्ध से प्रार्थना भी करता हूं। जब हम सारनाथ में हों, आषाढ़ की पूर्णिमा हो, अभी जो यहाँ पर मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों ने यह देखा भी है कि किस प्रकार से भगवान तथागत बुद्ध मध्यम मार्ग को अपनाते हुए पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलने की जो परिकल्पना है, वह केवल भगवान तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही मिल सकती है। और आज यह विश्व की बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वह सब इसको स्वीकार करने के लिए विवश हैं। ये भगवान तथागत बुद्ध के जो भी अनुयायी हैं, हमारे बौद्ध भिक्षुगण भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं, सबके लिए गौरव की बात है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका यह संसदीय क्षेत्र भी है, यहीं से चुन करके वह देश की संसद में जाते हैं, और 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, उन सबके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से हम लोगों की डबल इंजन सरकार है। देश में भी हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और दोनों सरकारों का एक लक्ष्य है, जो भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं उनका विकास करना, और जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, चाहे देश के अंदर चाहे दुनिया के अंदर, अगर वह भारत में आवें तो उनको यह लगना चाहिए कि हम भगवान बुद्ध की धरती पर आए हैं। भगवान बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, देश भी है, दुनिया भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को इस बात का सर्वाधिक गौरव प्राप्त है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये पवित्र सारनाथ भी है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर
श्रावस्ती है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर संकिसा है और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राचीन काल में कपिल वस्तु के रूप में भगवान तथागत बुद्ध की राजधानी के नाते जाना जाता था, पिपराहवा भी है, जहाँ से उनके पवित्र अवशेष प्राप्त हुए थे। और उन्हीं पवित्र अवशेषों को लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक डेलीगेशन भारत से रूस यानी कलमिकिया भेजा था और उसका नेतृत्व करने का मुझे अवसर दिया था। जब मैं कलमिकिया पहुंचा तो मुझे इस बात पर अत्यधिक गौरव है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक राज्य की आबादी लगभग 3 लाख है और मुझे लगता है कि उस 3 लाख की आबादी में 90% लोग भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी थे। जब हम पवित्र अवशेष लेकर के वहाँ पहुँचे तो पूरा कलमिकिया गणराज्य का जन समुदाय पवित्र अवशेषों के स्वागत के लिए श्रद्धापूर्वक सड़क के किनारे खड़ा था। जहाँ पवित्र अवशेष रखे गए वहाँ 1 सप्ताह का लगभग कार्यक्रम था। वहाँ लगातार लोगों का केवल कलमिकिया से ही नहीं बल्कि आसपास के जो देश थे वहाँ से भी लोगों के आने की जब भीड़ हम लोग देख रहे थे तो हमको ये लगा कि जिस भारत की धरती पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया, जहाँ उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, जहाँ वह स्वर्ग से धराधाम पर आए, जहाँ उन्होंने वर्षावास अधिकांश श्रावस्ती, कौशाम्बी, अयोध्या सहित कई स्थानों पे उन्होंने बिताने का काम किया। उन सारे स्थानों को हम जब यहाँ देखते हैं तो अभी यह तो मैं आप सबको पूरे विश्वास और भरोसे से कह सकता हूँ कि भगवान तथागत बुद्ध को लेकर के एक अंतर्धारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो दिखाई तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रही है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर बहुत गहराई से भगवान तथागत बुद्ध के प्रति लोगों का ध्यान जा रहा है। भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोग संकल्पित हो रहे हैं। इसलिए आज का दिन जब यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन है आप सब ने किया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के तत्वाधान में, और मुझे आज पहली बार इस परिसर में इस स्थान पर आने का मौका मिला, हम आपको ये जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो भी करना होगा वह सब कुछ हम लोग करने के लिए सदा तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर से भी मैं आप सबको यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस स्थान से जुड़ करके मुझे विशेष गौरव की अनुभूति हो रही है। आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा मुझे पहले ही बताया गया था कि मुख्य अतिथि के नाते मुझे शामिल होना है, लेकिन किसी भी रूप में ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना ये गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं इसके प्रति आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं वो जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर लगभग 40 देश ऐसे हैं जहां बहुसंख्य बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और अधिकांश देशों में तो अगर गिनती गिनेंगे तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां भगवान बुद्ध का संदेश ना पहुंचा हो, जहां भगवान बुद्ध के अनुयायी ना हो। यह ऐसा समय है जब हम सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और मुझे गर्व इसलिए होता है कई बार
कि उन सम्राट अशोक महान का मैं वंशज हूँ जिन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचाने का शांतिपूर्ण प्रयास जो उन्होंने किया, जिसे आज भी स्वीकार किया जाता है। आज यह भी दोहराया जा चुका है, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विश्व का सबसे बड़ा मंच वर्तमान व्यवस्था में, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उस मंच से खड़े होकर के वह कहते हैं कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, भारत ने दुनिया में युद्ध नहीं दिया है, शांति दिया है, सबको एक साथ लेकर के चलने का जो प्रयास लगातार हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति जो आकर्षण है, भारत की नीतियों का जो समर्थन है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दुनिया के 35 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, वह भारतवासियों के साथ साथ भगवान तथागत बुद्ध हमारे पास हैं। इसलिए उस सम्मान को प्राप्त करने का हमको अवसर मिला है, सम्मान मिला है। हम इसका स्वागत भी करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से इस संस्थान परिसर से हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि दुनिया के 35 देश, उनका सर्वोच्च सम्मान दुनिया के किसी दूसरे नेता को नहीं प्राप्त हुआ लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। जितने भी भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं, उनकी कनेक्टिविटी चाहे रेल मार्ग से हो, चाहे सड़क मार्ग से हो, चाहे हवाई मार्ग से हो, यह बनाने का प्रयास किया गया है। वाराणसी जहां हम बैठे हुए हैं, सारनाथ यहाँ पर है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर जहां भगवान तथागत बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था, वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार के गया में वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अर्थात जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं, वहाँ अधिकतम हवाई कनेक्टिविटी की, यानी दुनिया के किसी देश के भगवान बुद्ध के अनुयायी अगर आना चाहें, आते हैं सब बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। तो आज का दिन भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग पर, मध्यम मार्ग में चलते हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। भारतीय संस्कृति के जो मानने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के रूप में जो भारत के 140 करोड़ लोगों में से अधिकांश गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर है, आज उस दृष्टि से भी वाराणसी में एक बड़ा आयोजन है। संत रविदास जी के बारे में आप सबने सुना होगा। आज उनकी भी 650वीं जन्म जयंती है और गुरु पूर्णिमा का दिन है। और आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित हम सब लोग उस कार्यक्रम में भी सहभाग करने के लिए आए हैं। वाराणसी का एक अलग प्रकार का महत्व है। यहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायी भी आते हैं, संत रविदास जी के अनुयायी भी आते हैं, उनके भी अनुयायी दुनिया के अधिकांश देशों में है। और यहाँ बाबा विश्वनाथ, जिनको विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, इस प्रकार की चौपाई श्री रामचरितमानस में है। ऐसे बाबा विश्वनाथ जी की भी यह नगरी मानी जाती है। तो यहाँ एक तरह से त्रिवेणी है, मतलब अगर भगवान बुद्ध के अनुयायियों के कहें, संत रविदास जी के अनुयायियों की दृष्टि से कहें, और चाहे बाबा विश्वनाथ जी के प्रति जो के अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनकी दृष्टि से कहें, तो यह एक प्रकार से त्रिवेणी है। इस काशी का एक अपना अलग महत्व है। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद के रूप में देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त किए हैं, तब से सारनाथ का और भी अधिक विकास भी हुआ है। यहाँ जन सुविधाएँ भी बढ़ी हैं। और यहाँ जो आप सब रिसर्चर्स हैं संस्थान के अंदर, वह सब भी लगातार प्रयास जो कर रहे हैं। आने वाले समय में इसकी बड़ी ज़रूरत रहेगी। और जिस प्रकार से पाली भाषा, मैं नहीं समझता पाली भाषा, लेकिन ये अच्छा किया भी आपने मंच से, पाली में भी और संस्कृत में भी और हिंदी में भी जो आपने यहाँ प्रस्तुति दी, उससे जो नहीं भी समझता है उसको भी सारी बातें समझ में आती हैं कि भगवान बुद्ध
से जुड़े हुए विषय को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध को तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को जानने के बाद उसके आगे जानने के लिए जो बाकी है वह आप सब जनाने का प्रयास करिए, यह मैं आप सबसे आह्वान करता हूं। और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां कहीं भी सरकार की ओर से कोई ज़रूरत पड़ेगी, हम सबको कोई सूचना प्राप्त होगी, हम सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे हर प्रकार से सहयोग करने के लिए। और इस दृष्टि से जो आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इसमें आप आगे बढ़े, यही हम मंगल कामनाएं प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं। और आगे भी जब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा कोई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में या देश में कोई होगा, तो उत्तर प्रदेश की ओर से हमारे तमाम सब लोग हैं वो तो भूमिका निभाएंगे ही, लेकिन अगर मुझे भी कहीं ऐसे किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं इसके लिए आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words. We now invite Sri Raghav Prasad Bhatnagar, Director General of the International Buddhist Confederation, to deliver the vote of thanks. Namo Buddhaya. Most Venerable Mahasangha, distinguished monks of various Buddhist traditions and monasteries, our chief guest for today's function, Honorable Shri Keshav Prasad Maurya Ji, the Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Venerable Dr. Kahavat Shri Sumedha Thero, Professor Wangchuk Dorji Negi, the Venerable Vice Chancellor of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, our Venerable Rinpoche, the Secretary General of the International Buddhist Confederation, erudite scholars, esteemed friends from the media and the Dhamma, ladies and gentlemen, very, very warm greetings and namani. It is indeed a very great honor and joy that we all have assembled here to celebrate the Āṣāḍha Pūrṇimā celebrations today. This joy has, as has been mentioned by my speakers before me, has been amplified beyond our imaginations after the wonderful news that we all received a few days ago about this particular ancient site of Sarnath having been given UNESCO World Heritage recognition. This UNESCO recognition is yet another timeless chapter of India's unique Buddhist heritage finding its place on the global map. So heartiest congratulations to all of you. It has been an honor to be part of this wonderful auspicious event, which reminds us of the purposeful life, teachings, and contribution of the Shakyamuni Buddha towards the entire humanity. It was on this day that the Buddha laid the foundation of the Buddha Dhamm and the philosophy by preaching the discourse on the middle path to his 5 old companions in this very place. First of all, therefore, I would like to extend my heartfelt gratitude to the triple gem, that is the Buddha, the Dhamm, and the Sangh, for blessing us with his opportunity to celebrate this auspicious event today. On behalf of the International Buddhist Confederation, I first and foremost convey my deep gratitude and immense thanks to Shri Keshav Prasad Maurya Ji, the Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, who has taken out time from his extremely busy schedule, particularly on this day today, and encouraged us by participating in this auspicious event. बहुत shukriya, Maurya Ji. Our sincere thanks to Venerable Kahavat Shri Sumedha Thero Ji for giving us the insightful Dhamma talk on the significance of Āṣāḍha Pūrṇimā. Thanks also to the monk scholars for chanting the invocation verses. We are also grateful to the Ministry of Culture of the Government of India
for their unending support in making this event a success. A big thanks indeed also to Professor Wangchuk Dorji Negi, Honorable Vice Chancellor of this institute, and all the students of this institute for their brilliant performance. I would also like to convey my appreciation, gratitude, and thanks to all the members of my team of the International Buddhist Confederation who have, as usual, worked very energetically day and night with true Dhamma camaraderie. Thanks also to our Venerable Secretary General Rinpoche for his encouraging guidance to the IBC team. I would like to also thank all the media friends, both print as well as the electronic platforms, for coming and encouraging us. And thanks a lot also to our Master of Ceremony, Dr. Vishali. Very well done indeed, Vishali. Finally, I would like to thank everyone and share the merits of this event with all those who participated and helped us in make this a memorable moment. Before I conclude on behalf of the International Buddhist Confederation, I would humbly like to reassert that the Buddha Dhamma has an important application today and an equally special significance in the present day context because of its timeless relevance, context, and importance emanating from the set of its eternal values. Buddha taught us the very technique by the practice of which he himself attained the enlightenment and became the Buddha. He for the first time shared with others what he had experienced himself intrinsically. He presented the universal Dhamma, the core philosophy and practice of which leads to the remedial cessation of sufferings. This day therefore signifies transmission of the enlightened knowledge and wisdom of the Buddha to humankind at the level of Pariyapatti, the Patipatti, and the Pativedha. Buddha Dham therefore has a role to play in the life of all mankind, our generation and the next one, universally. It is thus our individual and collective responsibilities to share the thinking, knowledge, and experiences of the Buddha Dhamma with as many people as possible so that they not only experience the practical benefits of the middle path, but in turn also become the intergenerational instrumentalities of carrying forward a life of peace, happiness, universal love, compassion, and harmony. Thank you and Namo Buddhaya. Thank you, sir. On behalf of the organizers, the International Buddhist Confederation and the Central Institute of Higher Tibetan Studies, I extend heartfelt gratitude to our chief guest, Venerable Sangha members, dignitaries, and all participants for gracing this occasion. With this, we come to the end of today's Āṣāḍha Pūrṇimā celebrations. I request all to be seated. I also request Secretary General IBC, Vice Chancellor CIHTS, DG IBC, and Registrar to kindly escort our Honorable Chief Guest for light refreshments. For all others, kindly remain seated as the Chief Guest departs. For all others, kindly remain seated.